इनकन्वीनियंस जो ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं बच्चों। सिंस मैंने तो डिसाइड यही किया हुआ था दैट आई विल बी कंडक्टिंग अ फिजिकल क्लास। आई वाज ऑन माय वे टुवर्ड्स द सेंटर। फिर हुआ ये कि इतनी तेज बारिश स्टार्ट हो गई दैट आई नीड टू रीथिंक। मुझे सोचना पड़ा कि अगर बच्चे अभी घर पहुंच गए तो दैट विल बी फाइन, वरना बाद में जो है वो इशू हो सकता है। आपको पता है कराची और इतना ज़्यादा सीवियर ट्रैफिक जाम हो जाता है कि इट्स नियरली टू इम्पॉसिबल टू रीच टू योर डेस्टिनेशंस। लेकिन फिर यही हुआ भी, आई थिंक ज़्यादा बारिश नहीं हुई और बारिश रुक गई। और चले खैर चले, वी नीड टू कंटिन्यू आवर ऑनलाइन क्लास टुडे। सो स्टार्ट करते हैं बच्चों आगे। Again, if you have any questions, any queries, feel free to write on the chat option बच्चों, ठीक है? चैट ऑप्शन में लिख देगा, पूछ लेगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो फील फ्री। Okay, in our last session we have seen about the full duplex, half duplex, and serial versus parallel. We have also seen. Now we need to see synchronous transmission बच्चों versus asynchronous transmission, ठीक है? And after that we are going to look into the devices that we have. और इसके बाद इंशाल्लाह ताला next session के अंदर we are going to kick off with another topic, and that topic is called data transmission, ठीक है? तो start करते हैं बच्चों आप। Okay, so when we talk about बच्चों synchronous versus asynchronous transmission, so first starting with asynchronous transmission of data. Asynchronous transmission of data. उस्मान नहीं, आपको नेक्स्ट क्लास में सारी बुक्स नहीं लानी। मैं आपको बता दूंगा, आई विल बी वर्किंग ऑन P1 पास, P1 नोट्स वाली बुकलेट्स मैं आप लोग से मंगवाऊंगा, बट नॉट राइट नाउ, अभी नहीं, थोड़े टाइम में, ठीक है? आई होप आप लोगों ने सबने रिसीव कर ली होंगी अपनी बुकलेट्स। सो मैं थोड़े टाइम में मंगवाऊंगा, अभी नहीं, ठीक है? So let's talk about बच्चों asynchronous transmission of data. When we talk about the asynchronous transmission of data, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं बच्चों? We transmit data in the form of groups, and those groups are having starting and ending patterns defined. So what does this means बच्चों? ये एक ऐसी टाइप ऑफ ट्रांसमिशन होती है। इस ट्रांसमिशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं? हम एक स्टार्टिंग पैटर्न बताते हैं पहले। व्हेन वी ट्रांसमिट डाटा, तो हम एक पैटर्न बताते हैं कि भाई 1 0 1 1 1 0। So this is the pattern. Whenever this pattern comes, this means that this is the starting of the data.
दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ द डाटा, देन वी ट्रांसमिट आवर डाटा, फिर आपका डाटा चला जाता है सारा, वट एवर द डाटा इज, फिर आपका डाटा ट्रांसमिट हो जाता है, और फिर आपका जब डाटा कंप्लीट हो जाता है तो हम यहाँ पे बता देते हैं विद अ एंडिंग पैटर्न। हम यहाँ पे डिफाइन क्या करते हैं, एक एंडिंग पैटर्न डिफाइन कर देते हैं, तो रिसीवर को पता चल जाता है कि आपका डाटा कहाँ से स्टार्ट हुआ था और कहाँ तक आपका ये डाटा का पैटर्न था। एंड दिस वाज योर डाटा। सो दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन बच्चों इज कॉल्ड asynchronous transmission of data. We transmit data in the form of groups. This is the whole group having the starting and ending patterns defined. So this is about the asynchronous transmission. बस सिंपल सा ही आपके पास, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं, ये डायरेक्टली आपके सिलेबस का पार्ट भी नहीं है, मैं सिर्फ इसलिए पढ़ा रहा हूँ बिकॉज आप लोग को इसके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, हाँ फातिमा, आई होप अभी तो आप पाकिस्तान में, तो यू कैन ऑर्डर, आप अभी ऑर्डर कर सकती हैं। यू विल बी मूविंग टू द फॉरेन स्टेट, आई थिंक थोड़ा लेट आप मूव करेंगी, तो आप करेंटली मंगवा लें सारी अपनी बुकलेट्स, और बाकी हम क्लास में जब सॉल्व करेंगे तो यू कैन ओपन अपने सामने, आप फ्रंट पे अपने ओपन कर लेगा बुकलेट्स। नाउ मूविंग अहेड बच्चों, मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, एंड लेट्स आई हैव जस्ट शेयर्ड द लिंक, यू जस्ट नीड टू फिल आउट दैट फॉर्म, और आपके पास क्या होगा, नहीं, जस्ट नीड टू ऑर्डर, मतलब आप सिर्फ मैं शेयर कर देता हूँ लिंक आपके साथ अगेन, लेट गिव मी अ मिनट, वेयर वाज द लिंक, आई थिंक आई फॉरगॉट टू शेयर, हाँ लेट मी शेयर द लिंक, मैं वापस से शेयर कर देता हूँ एक दफा आप लोग के साथ। यू जस्ट नीड टू फिल दिस फॉर्म, और नोट्स विल बी डिलीवर्ड एट योर होम बच्चों। ठीक है, तो मैंने शेयर कर दिया है, फातिमा, हरजा, यू जस्ट नीड टू फिल आउट दिस फॉर्म, और ये आपके नोट्स जो है दे विल बी डिलीवर्ड एट योर होम। ठीक है, आपको एक बड़ा फुल पैक विल बी अवेलेबल, जो जो इसके अंदर मेंशन की हुई है बुकलेट्स, वो सारी बुकलेट्स आपके घर पहुंच जाएंगी। ठीक है, सो इट विल बी इजी, जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना एक्टिविटी ये मैंने अब रखा है, ताकि मेरा जो वेंडर है वो डायरेक्ट अब बस आप वो प्रिंट करवाता है एंड आप लोगों को घर तक पहुंचा देता है। इट विल बी वेरी इजी फॉर यू बिकॉज इकोनॉमिकल एज वेल, बिकॉज अगर आप लोग इसको फोटो स्टेट करवाते हैं तो इट विल कॉस्ट यू अलॉट, हम लोग बल्क में काम करवाते हैं, तो दैट्स वाई हमें काफी चीप पड़ता है ये। ठीक है, तो आप लोग को भी चीप प्राइस के अंदर ही मिल जाएगा, अवेलेबल है। नाउ मूविंग अहेड बच्चों, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पे नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिंक्रोनस ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। व्हेन वी टॉक अबाउट द सिंक्रोनस ट्रांसमिशन ऑफ डाटा, तो सिंक्रोनस के अंदर बच्चों क्या होता है, वी ट्रांसमिट stream of bits with a clock time defined. So what does that mean? तो बच्चों इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नंबर ऑफ बिट्स भेजते रहते हैं, हम डाटा की स्ट्रीम एक भेजते रहते हैं सिंक्रोनस के अंदर। अब रिसीवर ने क्या किया होता है, दिस इज योर सेंडर एंड दिस इज योर रिसीवर।
सो एट द रिसीवर साइड, रिसीवर ने यहाँ पे आप अपने पास एक टाइम फ्रेम डिफाइंड किया हुआ होता है, लाइक 900 नैनो सेकेंड्स। तो 900 नैनो सेकेंड के बाद बच्चों जो भी डाटा आता है वो क्या करेगा, उसको ग्रुप टुगेदर करेगा। लाइक फॉर एग्जांपल ये डाटा आ गया आपके पास 900 नैनो सेकेंड्स के बाद, तो वो उसको क्या करेगा, एक ग्रुप बना लेगा और इट विल कंसीडर दैट पैटर्न एज अ ग्रुप, ठीक है। एंड सो ऑन, इसको एक ग्रुप बना देगा वो, एंड सो ऑन। इस तरह आपके पास डाटा आता रहेगा आता रहेगा। आप लोग क्या करते रहोगे बच्चों, आप लोग अपने डाटा को इन द ग्रुप फॉर्म के अंदर ट्रांसफर करते रहते हैं, एंड सो ऑन, ये आपका मैकेनिज्म चलता रहता है। तो दिस इज अबाउट द सिंक्रोनस ट्रांसमिशन, नथिंग, वी जस्ट ट्रांसमिट स्ट्रीम ऑफ बिट्स विद अ क्लॉक टाइम डिफाइंड। उस क्लॉक टाइम के बाद आपके पास क्या करता है, जितनी भी बिट्स रिसीव हुई भी होती है आप उनका एक ग्रुप बना देते हैं। तो दैट वाज अबाउट द सिंक्रोनस ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। एसिंक्रोनस के अंदर हम स्ट्रीम ऑफ बिट्स ट्रांसमिट करते हैं बट विद अ एंडिंग एंड स्टार्टिंग पैटर्न डिफाइंड, ठीक है। तो जैसे वो एंडिंग पैटर्न आएगा तो आपके पास क्या करेगा, आप वो डाटा को एक ग्रुप टुगेदर कर देते हैं। ये एक छोटा सा टॉपिक था बच्चों, अगेन आई एम रिपीटिंग, ये आपके सिलेबस का पार्ट डायरेक्टली नहीं है, और एग्जामिनर ने भी आज तक कभी खुद से नहीं पूछा ये आप लोग से। लेकिन आप लोग को आगे अभी दो डिवाइसेस पढ़ानी है। वन डिवाइस इज कॉल्ड यूएसबी and the other device is called ICs, integrated circuits, and both of these devices uses one of the technology for transmission of data, okay, like ICs use synchronous transmission of data and USBs use asynchronous transmission of data। तो आप लोग को इसकी बेस पता होनी चाहिए कि synchronous और asynchronous होता क्या है आपके पास, ठीक है। ओके, will he not receive anything before 900? व्हाट अबाउट दैट? तो फातिमा बेटा देखिए होता ये कि देखिए 900 सेकंड्स तक डाटा तो आ रहा है, रिसीवर के पास स्ट्रीम एक फ्लो आ रहा है, एक फ्लो ऑफ बिट्स आ रहा है। लेकिन वो क्या करेगा, आफ्टर 900 सेकंड जितनी भी बिट्स रिसीव हुई होंगी उनको ग्रुप टुगेदर कर देगा, उनका एक ग्रुप बना देगा। देन अगेन फिर 900 नैनो सेकंड्स वेट करेगा, फिर एक ग्रुप बना देगा, फिर 900 नैनो सेकंड्स वेट करेगा, फिर एक ग्रुप बना देगा, एंड सो ऑन, दिस ग्रुपिंग विल कैरी ऑन, ये आपका ग्रुपिंग चलती रहेगी, ठीक। तो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम लोग आते हैं अपने मेजर टॉपिक के ऊपर आज का। ये तो बिल्कुल बेसिक बच्चों वाली बातें कर रहे थे हम लोग यहाँ पे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन ऑफ द मेजर टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, बिकॉज व्हेनेवर वी ट्रांसमिट डाटा बच्चों, जब भी हम डाटा ट्रांसमिट करते हैं तो देयर आर चांसेस ऑफ एरर्स, ठीक है, देयर आर चांसेस ऑफ एरर्स इन द डाटा। सो वी हैव डिफरेंट मेथड्स। नाउ वी आर गोइंग टू किक ऑफ विद the methods of error detection। एरर को पहले आप डिटेक्ट करते हैं and then you correct them। so error detection and correction methods। so when we talk about बच्चों error detection and correction methods, so we have many error correction and detection methods, starting with the first one. We call that method as parity check. We have another method that is called checksum. We have another method that is called check digit. We have another method that is called ARQs. So these are the methods that we are going to study बच्चों one by one, starting with the checksum। checksum से start करेंगे आज, then we need to study parity check, then we need to study check digit, and at last we need to study ARQs as well। So these are the methods that we are going to study for the error correction and detection। because देखो जब डाटा जाता है तो there are chances कि इस डाटा के अंदर क्या आ जाए, एरर आ जाए, ठीक है। अब बिफोर ये स्टार्ट तो करना ही है ये
मेरा एक क्वेश्चन ये कि व्हाई एरर्स आर कॉज्ड, एरर आते क्यों है आपके पास, व्हाई एरर्स आर प्रोड्यूस्ड। रीजन फॉर एरर्स, सो बच्चों द फर्स्ट रीजन इज, आपको पता है देखिए, समटाइम्स वी ट्रांसमिट डाटा एट द डे एंड, आपका डाटा ट्रांसमिट हो रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ वायर्स। आपका डाटा एक वायर के अंदर क्या हो रहा होता है, ट्रांसमिट हो रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ जीरोस एंड वंस। डाटा जीरोस एंड वंस की फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा होता है। ये जीरोस एंड वंस क्या होते हैं, दे आर डिफरेंट वोल्टेज, दे आर डिफरेंट वोल्टेजेस लेवल्स। ये आपके पास वोल्टेज है, करंट है। व्हेनेवर करंट पासेस थ्रू अ वायर, जब एक करंट पास होता है थ्रू अ वायर, तो इट ऑलवेज जनरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आपके पास क्या जनरेट करता है, ये जनरेट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, so whenever current flows through a wire, it generates electromagnetic waves। अब ये electromagnetic waves बच्चों क्या कर सकती है, मे बी पॉसिबल आपके बराबर में एक और वायर जा रहा था, आपके बराबर में एक और वायर जा रहा था, तो they can they can affect they can affect the voltage level। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास ये बिट जीरो थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से क्या हुआ, ये बिट आपके पास 1 से 0 हो गई। सिमिलरली ये बिट 0 थी, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिली, इसकी मूवमेंट हुई इसके अंदर, तो ये आपके पास 0 से 1 हो गई। सो वन ऑफ द मेजर रीजन बच्चों फॉर एरर्स इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अदर रीजन कैन बी, एक बड़ा मेजर रीजन और भी आपके पास फॉर द एरर्स, बिकॉज देखिए अगेन, जब आपके पास डाटा पास होता है आपके थ्रू द वायर, जब एक वायर में डाटा पास हो रहा है, तो यू हैव सीन कि आप कभी कभार वायर्स आर इन ओपन स्पेसेस, सो दे आर एट द प्लेस जहां पे हीटिंग अवेलेबल होती है, सनलाइट डायरेक्टली पड़ रही होती है, तो हीटिंग प्रोड्यूस हो रही होती है आपके पास। तो इस केस में भी क्या होता है आपके पास, इस केस में भी क्या होता है, आप देखिए अब एक इलेक्ट्रॉन ही है ना ये आपके पास, जो जीरो है ये एक इलेक्ट्रॉन ही है ना। इलेक्ट्रॉन को जब आप हीट अप देंगे तो इसके अंदर मूवमेंट ज्यादा होगी, और इस मूवमेंट की वजह से मे बी पॉसिबल ये जीरो कहीं आपके पास 1 ना बन जाए। एंड अगर ये 1 बन गया तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, और जाहिर सी बात है आपके पास सारा डाटा चेंज हो जाएगा। एंड दिस इज द अगेन द सेकंड कॉज फॉर द एरर्स। तो दो मेजर रीजन है आपके पास एरर्स के इन द डाटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड द हीट इशू। तो ये दो इश्यूज आते हैं आपके पास व्हेनेवर यू आर ट्रांसमिटिंग द डाटा। नाउ मूविंग अहेड बच्चों, मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अब हम लोग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेस्ट स्टफ। अब हम यहाँ पे मेथड की बात करते हैं। द मेथड दैट वी आर गोइंग टू स्टडी दैट इज कॉल्ड द चेकसम। दिस मेथड इज यूज्ड टू डिटेक्ट एरर्स। आपके पास एरर्स को डिटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, यूज करते हैं इस मेथड को। नाउ लेट्स सी बच्चों, बिफोर दैट लेट मी चेक इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस टिल नाउ। नो वी आर गुड, नो क्वेश्चंस। तो बच्चों आगे बढ़ा मैं यहाँ पे अब, और
व्हेन वी टॉक अबाउट द चेकसम, जब हम चेकसम की बात करते हैं यहाँ पे, तो चेकसम के अंदर क्या होता है आपके पास, वी ऑलवेज हैव अ सेंडर, हमारे पास सेंडर होता है। अच्छा, वन थिंग दैट आई शुड क्लैरिफाई ओवर हियर, आप लोगों ने बचपन में, आप लोग के स्कूल के टीचर्स ने कुछ मेथड्स आप लोग को पढ़ाए होंगे, ठीक है, लाइक वो 256 ऐड करें, ये करें, सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है। तो आप लोगों ने बड़ी चीजें बताई थी यहाँ पे, बट नाउ जो जो आप लोगों ने पढ़ा था अबाउट चेकसम्स बच्चों, सब भूल जाएं, ठीक है, कोई चीज याद ना रखें, सब भूल जाएं जो जो आप लोग चेकसम के बारे में पढ़ चुके हैं। इट्स अ न्यू स्टार्ट, लेट्स सी। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है बच्चों चेकसम का हमारे पास। एट द सेंडर साइड, सबसे पहले हम लोग सेंडर साइड के ऊपर काम करेंगे। एट द सेंडर साइड व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू ऐड जो भी आपका डाटा था, वी आर गोइंग टू ऐड all our data at the sender side। जो भी आपका डाटा था आप क्या करोगे, उसको ऐड कर लोगे बच्चों, ठीक है, एडिंग द डाटा at the sender side। when you are going to add the data at the sender side, you are going to obtain we will obtain checksum byte। तो जो भी आप डाटा ऐड करने के बाद आपके पास बाइट आएगी, वी कॉल दैट बाइट एज, बच्चों क्या कहते हैं उस बाइट को हम लोग, वी कॉल दैट बाइट एज checksum byte। नाउ व्हाट वी डू, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम लोग क्या करते हैं, अपना डाटा ट्रांसमिट कर देते हैं रिसीवर को। लेट्स अज्यूम दैट दिस इज आवर रिसीवर। अब रिसीवर को बच्चों दो चीजें हम लोग ट्रांसमिट करते हैं। We transmit two things to the receiver। First, the data as it is हम लोग ट्रांसमिट करते हैं, एंड along with data हम लोग यहां से सेंड करते हैं सेंडर checksum byte। तो data along with data what we send, हम सेंड करते हैं सेंडर की checksum byte। तो ये दो चीजें रिसीवर के पास जाती हैं बच्चों, क्या क्या जाता है, डाटा जाता है, और सेंडर की चेकसम बाइट जो आपने सारे डाटा को ऐड करने के बाद बनाई होती है, तो ये बाइट जाती है। अच्छा, वन थिंग दैट यू शुड रिमेंबर बच्चों, दिस बाइट पैटर्न इज यूनिक, दिस बाइट is unique for every data। ये बाइट यूनिक होगी फॉर एवरी डाटा। अगर मैं कोई भी मेरे पास डाटा था, अगर मैं उसके अंदर एक डॉट का भी चेंज करूंगा, तो द वैल्यू ऑफ दिस बाइट विल बी चेंज। अगर इस बाइट के अंदर मैं इस डाटा के अंदर एक डॉट का इंक्रीमेंट करता हूं, और इफ आई डिक्रीमेंट एनीथिंग फ्रॉम दिस डाटा, if I change anything from in this data, then the value of this byte is changed। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो along with the data we send the sender checksum byte to the receiver। अब रिसीवर साइड पे बच्चों आप लोग क्या करते हैं, you again
एड द सेम डेटा। अब वापस से क्या करते हैं, डेटा को एड अप करते हो, ठीक है। तो मैंने यहां पे लिखवाया, वी अगेन एड ऑल आर डेटा एंड आफ्टर एडिंग, अब आप लोग क्या रिसीव करते हो, वी रिसीव रिसीवर चेकसम बाइट। तो जब आप रिसीवर साइड पे सारा डाटा वापस से बच्चों एडअप करते हो, तो रिसीवर साइड पे आपके पास क्या आती है, अगेन चेकसम बाइट आ जाएगी। अब आप लोग क्या करते हो, रिसीवर साइड के ऊपर आप कंपेयर करोगे, यहाँ पे किसको कंपेयर करोगे, यू आर गोइंग टू कंपेयर सेंडर checksum byte with receiver checksum byte. If these bytes are equal, अगर ये दोनों bytes बच्चों इक्वल है आपके पास, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है आपके पास नो changes in data during the transmission. So during the transmission there were no changes in the data. अगर ये दोनों आपका sender checksum byte और receiver checksum bytes are equal, no issues Abdul Nafi beta, I will share the recorded lecture with you, ठीक है। I know that's why मैंने क्लास ऑनलाइन करी थी, बारिश हो रही थी गुलशन साइड पे बहुत ज्यादा, when I was at डिफेंस मैंने पूछवाया था, तो that's why I was afraid कि बच्चे कहीं ट्रैफिक में ना फंस जाएं, और it creates a hack, आप बहुत प्रॉब्लम में आ जाते हैं जब आप लोग ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं, सो इट्स अ वेरी प्रॉब्लमेटिक स्टफ। खैर, वेयर आई वाज, तो मैं आप लोग को बता रहा था, आई विल गिव यू अ क्विक रिकैप दैट व्हाट वी हैव डन एट द एंड ऑफ द सेशन एज वेल। सो रिसीवर चेकसम बाइट आप लोग क्या करते हैं, सेंडर चेकसम बाइट और रिसीवर चेकसम बाइट को आप लोग क्या करते हो, कंपेयर करते हो। इफ दे आर इक्वल दिस मींस नो चेंजेस इन डाटा ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन, ठीक है। और अगर आपके पास ये इक्वल नहीं होते बच्चों, इफ दे आर नॉट इक्वल, इफ दे आर नॉट इक्वल, तो इसका मतलब क्या होता है आपके पास, दिस मीन्स दिस मीन्स error in data during ट्रांसमिशन। इसका मतलब ये होता है बच्चों, आपके पास ये एरर कॉज हो गया ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन। अब इस केस में क्या होता है, अगर आपके पास एरर आता है बच्चों, तो इस केस के अंदर आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं इस केस में आप लोग क्या करते हो, आप लोग रिक्वेस्ट करते हो सेंडर को टू रीसेंड सेम डाटा अगेन। एंड इसी के साथ बच्चों आप लोग का यहाँ पे चेक सम कंप्लीट होता है। लेट मी गिव यू अ क्विक रिकैप के व्हाट वाज चेक सम ऑल अबाउट। सबसे पहले क्या किया, सेंडर साइड पे सर
हम लोगों ने सारे डाटा को एड अप करा, and when we add all our data, what we obtain checksum byte. What is checksum byte? A byte that is having a unique value for every data. हर डाटा के लिए आपके पास क्या होती है? checksum byte is having a unique value. Then what we do, हम लोग डाटा ट्रांसमिट कर देते हैं along with sender checksum byte to the receiver. ठीक है, हम दो चीजें ट्रांसफर करते हैं रिसीवर को, डाटा along with the sender checksum byte. At the receiver side, what we do, we again add all our data. हम वापस अपने सारे डाटा को एड अप करते हैं, and again we receive a checksum byte at the receiver side. ठीक है, again we receive a checksum byte at the receiver side, and if sender checksum byte and receiver checksum bytes are equal, this means during transmission no changes in data occurred. हमारा डाटा बिल्कुल सिक्योरली ट्रांसमिट हो गया, हर चीज करेक्ट थी, हर चीज परफेक्ट थी. बट इफ दे आर नॉट इक्वल, दिस मींस ड्यूरिंग ट्रांसमिशन आपके डाटा के अंदर एरर आ गए. तो इस केस में क्या करता है, आपका रिसीवर रिक्वेस्ट करता है सेंडर को टू रीसेंड सेम डाटा अगेन. एंड दिस इज द होल प्रोसेस बच्चों ऑफ चेकसम. ठीक है, आई होप आप लोग को चेकसम की प्रोसेस क्लियर हुई होगी. अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, पूछ लें, फील फ्री टू आस्क. ठीक है, अगर कोई डाउट हो रहा है, कोई क्वेश्चन है, तो यू कैन आस्क. Perfect. So let's move forward, बच्चों. Now let's talk about another checking method, and we named this checking method as parity check. Now parity check के अंदर बच्चों हम लोग क्या करते हैं, there are two types of parity checks. इसकी आपके हमारे पास दो टाइप की डिवीजन होती है. One of the divisioning of parity check is 1D parity check and we have 2D parity check as well. 2D parity check को भी called with another name as well बच्चों, इसको हम लोग ब्लॉक पैरिटी भी कहते हैं. Now when we talk about the 1D and 2D parity check, आगे बात करेंगे अभी इसके ऊपर कि ये क्या होता है 1D. पहले बात कर लेते हैं पैरिटी चेक क्या होता है. तो अगेन इट्स अ मेथड टू चेक एरर्स इन योर डाटा. पैरिटी चेक के थ्रू आप लोग डिटेक्ट करते हैं कि आपके डाटा के अंदर कोई एरर है या नहीं है एंड ऑल दैट. तो हम लोग चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ पैरिटी चेक. अब पैरिटी चेक आपके पास अगेन दो टाइप्स के होते हैं, एक 1D और 2D के अंदर भी आप लोग डिवाइड करते हैं, और इसकी कैटेगरीज एक और तरफ भी आप लोग डिवाइड कर सकते हैं. वी कॉल दोस कैटेगरीज एज इवन पैरिटी चेक and odd parity check. So ये भी हमारे पास बच्चों, these are the parity checks. These are the two types of parity checks. One is called even and the other one is called odd. अब before we end today's session, मुझे आप लोग से एक सवाल है कि क्या आप लोग मुझे even numbers बता सकते हैं? What are even numbers and what are odd numbers? I will be really happy अगर आप लोग मुझे बताएं on Math Chat. What are even numbers and what are odd numbers? Perfect, Usman ने बताया that even numbers are 2, 4, 6, 8, 10. Thank you Usman. Anyone else? और कोई बच्चा मुझे बताना चाहे अगर? Oh my God, फातिमा ने हमें odd numbers बता दिए, और फातिमा ने एक नंबर खा गई. फातिमा 1 से स्टार्ट होता है, फातिमा 1, 3, 5 एंड सो ऑन. ठीक है,
So 1 is a odd number. एंड उस्मान ने हमें यहाँ पे ऑड नंबर बता दियो. उस्मान यू आर टू जीनियस बेटा. क्या बात है आपकी. एक्सीलेंट, अमेजिंग, वंडरफुल. और आई थिंक अब आप लोग मुझे जान चुके होंगे अच्छी तरह, जब मैं ज्यादा तारीफ करता हूँ किसी बच्चे की तो कुछ गड़बड़ जरूर होती है. ठीक है. सो मैंने उस्मान की बहुत ज्यादा तारीफ कर दी है. सो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है. ठीक है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है. क्या आप लोग वो गड़बड़ गड़बड़ किया था ना, गड़बड़ कहते हैं, क्या आप लोग वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि व्हाट्स द इशू. अब्दुल नाफे, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी. यू शुड हैव आंसर्ड करेक्टली. अब्दुल नाफी, तुमने इवन नंबर्स को क्या क्या कर दिया. 133 को इवन कर दिया, 7 को इवन कर दिया, ऑड को तुमने पता नहीं क्या क्या कर दिया. क्या पता नहीं. खैर भाई, इतना कंफ्यूज नहीं हो बच्चों. उस्मान ने हमें जो रेंज बताई थी, दैट रेंज वाज 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन. तो बच्चों दिस रेंज स्टार्ट फ्रॉम 0. बस ये बात याद रखनी है. बच्चे इसको स्किप कर देते हैं. तो अगर आपके पास 0 आ रहा है तो 0 इज एन इवन नंबर. अब याद रखिएगा, 0 इज एन इवन नंबर. और अगर ऑड की बात करें तो जैसे अब फातिमा ने एक बिट खा गई, तो ऑड नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, 3, 5, 7, 9 एंड ऑफ कोर्स सो ऑन. ठीक है. तो इवन पैरिटी चेक के अंदर हमारे पास क्या होता है बच्चों. कहाँ लिखूं, कहाँ लिखूं. यहां लिख देता हूं. व्हेन वी टॉक अबाउट द इवन पैरिटी चेक, तो इसके अंदर जो भी आपका बाइनरी पैटर्न होता है, उसके अंदर आप लोग क्या करते हैं, उसके अंदर नंबर ऑफ वंस शुड बी इवन. जो भी आपका बाइनरी पैटर्न है, इफ यू हैव अप्लाइड इवन पैरिटी चेक, तो नंबर ऑफ वंस जो है उस बाइनरी पैटर्न के अंदर शुड बी इवन. एंड इन ऑड, ऑफ कोर्स ऑड के अंदर क्या होना चाहिए सर. ऑड होने चाहिए. सही है सर. नो रॉकेट साइंस, नो रॉकेट साइंस ओवर हियर. सो in the binary pattern, number of ones should be odd. So अभी हम लोगों ने बड़ी बेसिक बातें करी हैं बच्चों अबाउट पैरिटी चेक. इसको अभी डिटेल में हम लोग बात करेंगे इंशाल्लाह ताला अपने अगले सेशन के अंदर. मे बी पॉसिबल शायद ओवर द वीकेंड आई विल बी कंडक्टिंग एन एक्स्ट्रा क्लास. ठीक है. तो वो मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा अर्ली. ठीक है. अगर मैं कंडक्ट कर रहा हूँ तो मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा. आप लोग को टाइमिंग्स बता दूंगा. अगर कोई क्लैश हुआ तो मैं टाइमिंग्स चेंज कर लूंगा. सो बिकॉज द क्लास आई मिस्ड ऑन मंडे, तो वो मैं इसको कॉम्पनसेट करना है, तो वो मैं इसी वीक के अंदर कॉम्पनसेट करना चाहता हूँ बच्चों. ठीक है. सो पैरिटी चेक के बारे में आप लोग को अभी मैंने छोटी मोटी बातें बताई है कि 1D पैरिटी होता है, 2D पैरिटी होता है. 2D पैरिटी को भी कॉल ब्लॉक पैरिटी एज वेल. एंड there are two types of parity checks, even parity check and odd parity check. When we talk about the even parity check, so the number of ones should be even, and when we talk about the odd parity check, number of ones should be odd in the binary pattern. Okay. And the most important thing, even numbers start from 0. Okay. हाँ फातिमा, यस आई विल गिव यू ब्रेक. बिल्कुल मैं आप लोग को ब्रेक दूंगा फॉर द अक्टूबर नवंबर सेशन. बिल्कुल ब्रेक दूंगा मैं आप लोग को. और ड्यूरिंग दैट ब्रेक वी वोंट बी हैविंग क्लासेस. बिल्कुल आपके पास ब्रेक अवेलेबल होगी. ठीक है. आई विल डिस्कस विद सर साया और फिर मैं आप लोग को ब्रेक दूंगा. आप लोग का टाइमिंग मुझे आप लोग प्लीज व्हाट्सएप पे बता देगा कि आप लोग के पेपर कब स्टार्ट है और कब एंड है. ठीक है. सो एटलीस्ट यू शुड हैव 1 or 2 वीक्स गैप बिटवीन योर पेपर्स. ठीक है. मुझे पूरा अपडेट कर देगा फातिमा बेटा कब स्टार्ट और कब एंड होंगे. चलें, थैंक यू एवरीवन. आज इसको नीचे होल्ड करते हैं. इंशाल्लाह ताला अगले सेशन में इसको आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे. आई विल अपडेट यू ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल. हाँ
अब्दुल नाफे, चैप्टर 1 का टेस्ट आपका अभी नेक्स्ट वीक है बेटा, मैं अभी अनाउंस करता हूँ ग्रुप के ऊपर। चलो अल्लाह हाफिज, थैंक यू, बाय बाय।